Machephy Eduworld. Okay, next question. Let us include friction also. So let us say there is a table, or it's a big circular table. और सर्कुलर टेबल को ओमेगा से घुमा रहे हैं. We can externally control omega about the center, and there is a point. This is again horizontal plane. टेबल को ऊपर से देख रहे हैं, सर्कुलर टेबल. And टेबल के सेंटर से let us say 20 centimeter away, there is a block kept. Block का mass है 2 kg. There is a block kept, and the coefficient of friction between the block and the table is given to you as 0.5. So you have to find maximum omega. Find maximum omega such that block moves around, moves with the table, or in another way it can be asked ki maximum omega such that block does not slips. Find maximum omega such that block does not slips. अच्छा, यहाँ पे ध्यान रखना है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या ट्राई करते हैं, तुरंत एफबीडी ड्रॉ करने में लग जाते हैं और इक्वेशन सॉल्व करने लग जाते हैं. But that should not be the first step. First, you have to analyze the motion, because in mechanics, the beauty of mechanics is that you can actually imagine the things. 12th standard में electric field आएगा और वो सब आएगा तो थोड़ा difficulty होती है starting में imagine करने में. Mechanics you can imagine, so don't just jump towards making the free body diagram and solving the question. First, just take some time to imagine it. And अभी easy questions के लिए हो सकता है ज़्यादा imagine करने की ज़रूरत ना पड़े, but this habit will be useful for your exam. Very useful for when you're going to solve difficult questions. So you have to observe कि हाँ ये ओमेगा के साथ घूम रहा है, and अगर मैं टेबल पे बैठ के एफबीडी बनाने लगूँ तो गलत हो जाएगा एफबीडी, बिकॉज फिर स्यूडो फोर्स वगैरह आ जाएगा, इसलिए टेबल के बाहर बैठ के एफबीडी बनाना पड़ेगा. थिंग्स लाइक दिस यू शुड थिंक बाय योरसेल्फ. और ये ओमेगा से घूम रहा है मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आना चाहिए इसका सेंटर की तरफ. अब इस बार सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? कैन एनीबॉडी टेल? ब्लॉक अगर घूम रहा है टेबल के साथ तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? Friction. Yes, friction will be responsible. Okay, now draw the FBD, take some time to imagine it, and calculate the maximum value of omega. Radius is 20 centimeter. Vaishnavi, solve हो जाए तो tell me the answer. अच्छा, फ्री बॉडी डायग्राम सबको पता है कैसे बनाना है, बट आई विल जस्ट शो कि हाउ टू रिप्रेजेंट जब ये ऊपर नीचे फोर्स दिखाना हो. यहाँ पे भी मुझे नॉर्मल फोर्स इस डायरेक्शन में नहीं लग रहा, मुझे नॉर्मल फोर्स ऊपर दिखाना चाहिए था, तो ऊपर के लिए हम डॉट यूज करते हैं बिकॉज ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है. सो नॉर्मल फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में और नीचे वाला फोर्स हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं. दैट इज वन वे टू रिप्रेजेंट इट. नॉर्मल फोर्स डॉट से रिप्रेजेंट किया, जो फोर्स आउट ऑफ द प्लेन जा रहा है उसको डॉट से रिप्रेजेंट किया, और जो फोर्स नीचे के डायरेक्शन में जा रहा है उसको क्रॉस से रिप्रेजेंट किया. सो दैट आल्सो यू कैन डू, दैट इज वन वे टू शो इट. यहाँ पे भी इफ यू ड्रॉइंग द एफबीडी, सो नॉर्मल फोर्स लगेगा ऊपर के डायरेक्शन में और mg लगेगा नीचे के डायरेक्शन में. वैष्णवी, फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा अभी इस इंस्टेंट पे? राइट.
फ्रिक्शन राइट में क्यों लगेगा? सी मोशन स्टार्ट नहीं हो रहा, ऑलरेडी ये घूम रहा था। मैक्सिमम कितना ओमेगा दे सकते हैं, दैट इज आस्क्ड। सो सी सर्कुलर मोशन होना है तो अभी इस इंस्टेंट पे फोर्स लगना चाहिए सेंटर की तरफ। इस इंस्टेंट पे फोर्स लगना चाहिए सेंटर की तरफ, and this will be responsible for your centripetal acceleration. So frictional force should be equal to the centripetal acceleration. And of course मुझे maximum omega चाहिए, maximum omega चाहिए, friction की value less than equal to mu n आएगी। So maximum omega means maximum friction चाहिए। Then calculate the value of omega. AC is equal to omega square r. Limiting case में f should be equal to mu n. Question will tell me the value of omega once you have calculated it. So यहाँ पे mu mg, normal force will be mu mg. Sorry, normal force is mg, friction force will be mu mg. So when m cancelled, omega you'll get as root over mu by rg. .5, radius is 0.2, g is 10. So this is correct, mu is 0.5, r is 0.2, g is 10. Mu g by r आना चाहिए। Actually, what's the value of omega? Did you get it? 20. Yeah, 5. 5 radian per second. That will be the value of maximum omega. इससे कम रहेगा तो फ्रिक्शन इससे कम लग जाएगा। So remember, यहाँ पे मोशन स्टार्ट नहीं हो रहा तो मैं पीछे की तरफ फ्रिक्शन नहीं लगाऊंगा। This was already going in this direction. It is already rotating. तो मुझे सिर्फ बैलेंस करने के लिए अंदर के डायरेक्शन में there should be a force. So there is this fun game. So suppose there is a lift. This is a different kind of lift. This lift को हम rotate कर सकते हैं about the central axis. I'm calling it a lift because it is a big box, big cylindrical box, and it has a flooring. So what we do is we open the gate here. यहाँ पे कोई gate लगा हुआ है and you can send maybe कौन जाना चाहता है, नमन को भेज दिया जाए अंदर. So if you send Naman here and he can stand here. So Naman can stand here, and then what we'll start doing is अच्छा ऊपर से भी closed of course or open, it doesn't matter, but नीचे से भी closed, and we start rotating it with omega. इस पूरे बॉक्स को, सिलेंडर को ओमेगा से रोटेट करना स्टार्ट करते हैं. ओके, एंड अगर ओमेगा बहुत ज्यादा हो, so what will happen, even if you remove this floor from below, Naman will be safely standing here. Not standing here, he will be safely
sticking up here. He'll be rotating with the cylinder because of the friction. अगर नीचे वाला जो फ्लोर है वो हटा भी दिया, so because of the rotation there is a friction generated. Means centripetal acceleration के लिए there is a force required. That force will be given by the normal force. But और क्या क्या forces लग रहे हैं वो भी देख लेते हैं. So नमन के ऊपर mg लगेगा and because सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से नॉर्मल फोर्स आ रहा है, सो हमारा फ्रिक्शन भी लग सकता है ऊपर की डायरेक्शन में. फ्रिक्शन भी लग सकता है ऊपर की डायरेक्शन में. एंड अगर ओमेगा सफिशिएंट है तो ये फ्रिक्शन नमन के वेट को बैलेंस काउंट कर लेगा. सो लेट अस से जो यहाँ पे नमन और दिस लिफ्ट के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है दैट इज म्यू. So find minimum omega such that Naman does not fall. Find minimum omega such that Naman does not fall. Calculate it carefully. I'll give you the other things also. This radius is given as 0.2 meter. Or let us say let us say the radius is 2 meter and the friction coefficient ka value is 0.2. Then G is 10. Take G as 10. And Naman, what is your weight? 60. 60 kg. So Naman ka mass is 60 kg. Let us see how much friction is required. How much friction is required? How much minimum omega is required? That is the main question. Bharvi, tell me the equations. Centripetal acceleration के लिए कौन responsible होगा? कौन सा वाला force out of the three? Normal force. Yeah. So we'll write normal force is equal to centripetal force, that is MAC. So normal force will be M omega square R. And the friction should be balancing the mg. Friction की maximum value हो सकती है mu times n. Sorry, friction should be balancing the mg. So friction itna required. Friction should be equal to mg. But friction will depend on the normal force. So normal force required is mg by mu. This we can substitute here. So mg by mu is equal to m omega square r. What will be the value of omega? कितना वैल्यू आ जाएगा ये? Ten by root two. 10 by root 2. G is 10, R is 2 meter, and mu is Nine.
5 unitus Radian per second. radian per second. 5 radian per second will be the answer. So that is the omega that should be given to the cylinder so that number remains safe. And so these are the questions. Now the uniform circular motion हो रहा है, सिर्फ centripetal acceleration है, and we are not accelerating. Sir, Yeah. so can you please tell how to decide that which force is responsible for centripetal acceleration? So centripetal acceleration वाला force हमेशा center की तरफ लगता है. So this was your radius. You were revolving. So center से जो mass है वहां तक एक radius बना सकते हैं. So centripetal वाला force radius के just opposite लगेगा या radius के along लगेगा, you can say. So और कोई force नहीं लग रहा है radius के along, सिर्फ normal force ही लग रहा है. Okay. पिछले वाले केस में भी यहाँ पे एक ही force था radius के along, that was friction. So friction became responsible for the centripetal acceleration. So again, a case of UCM will take, and let us say there is a circular track. There is a circular track and it is horizontal. And the radius of the circular track is capital R. Width curve, road of the width is negligible compared to the radius. And यहाँ पे you are driving a car. Oh, this is a good car. Doesn't look like it, but this is a good car. Car का mass है m. Acceleration due to gravity is g. And you're going in this circular road. This is a circular road of radius r. Okay, and the coefficient of friction between the car and the road is mu. Mu is the friction coefficient between car and road. Friction coefficient between car and road. So the question is, find maximum speed with which you can drive such that car does not slips. Car does not slips and stays on track. Stays on track. I'll not give much hint here. So car is driving along the circular path and there is a friction. So something is responsible for keeping it in circular motion. So you must find out which force is responsible for centripetal acceleration and find out maximum V such that car does not slips and stays on the track. Aditi, do tell me once you have solved for the maximum value of velocity. Do tell me the answer. Aditi, which is the force responsible for the centripetal acceleration? You're not audible. I hope you can hear me. Yes, sir.
So which force is responsible for centripetal acceleration? See, normal force will be acting out of the plane. Mg will be acting into the plane. And this is the speed in this direction. So जो मुझे centripetal acceleration चाहिए वो इस direction में चाहिए, towards the center. That means the friction will be towards the center. Friction will be towards the center. And this friction will be responsible for centripetal acceleration. So friction की maximum value, that will be mu n mv squared by r, and normal force here will be equal to mg. From here we get that the maximum speed that you can go is equal to mu g r. That is the maximum value of velocity. If you want to calculate maximum value of angular velocity, that is v by r. So that will be mu g by r. So this does not only happen when pura track circular ho. Agar ek portion of the track is also circular, that means whenever you are taking a turn, the turn requires friction. And jitna sharp turn ho, jitna chota radius ho, sharp turn is chota radius. Suppose a turn is like this. This is a sharp turn. This is a sharp turn. And not a sharp turn would look like this. So its radius bada hai. So radius bada hoga to you can see the friction required will be smaller. But if radius is small, friction required will be greater for same speed. So that's why we need friction on the road. That's why we can't make very sharp turns on highways, because at highway the speed of the car is usually greater than 60, 70, 80, sometimes 100, and more than that. So this is the reason we avoid sharp turns on a highway. And even when there are turns, we use a different concept for design of the road. And that concept is known as banking. So यहाँ पे road flat था. In the next case, we are going to give the road an inclination, and this will be called banking of the road. So what I'm going to do is I'm going to zoom in on this part of the road, and look it from the bottom side. इस तरफ से देखेंगे. So actually the road, it looks like it's banked at an angle theta. Means ये road का inner वाला side है, this side A, and ये road का outer वाला side है, this side B. And the car over here you are looking from the back side. The car is this. These are the tires. So this is inclined with the horizontal. The road is inclined with the horizontal. So you must have observed कि जहाँ पे turn होता है highway पे, or even mostly at the highways, not at in your गली के road में banking नहीं देखा होगा, but mostly on the highways you will find that there is a small inclination, and that is called banking angle. Theta is called the. Why it is there? Yeah, we are going to learn that. Theta is called the banking angle. So the benefit of that is कि पहले मुझे friction required था centripetal force के लिए. But now if you draw the FBD now, mg नीचे की direction में लगेगा. Normal force will be perpendicular to the surface. So if suppose we require no friction, if friction
is not used. If friction is not used, this are taking a special case जहाँ पे friction है लेकिन use नहीं कर रहे for banking, then normal force का एक component वो ही can give the, that also can give you a centripetal acceleration. Again see, जो centripetal acceleration का direction है वो incline के down the incline नहीं होगा, it will be towards the center of the circle. So that acceleration will be towards the center of the circle. Centripetal acceleration will be towards the center of the circle. So that will be still be horizontal. But normal force के दो component हो जाएंगे. If this is theta, then this angle will be theta. We can write this as n cos theta, and this is n sin theta. So n sin theta की वजह से भी centripetal acceleration आ सकता है. This is only possible when banking is there. And let us say कि कितने speed के लिए, at what speed there is no friction. So I will rather write it, the condition like this: at what speed there is no friction required. At what speed no friction is required. At what speed no friction is required for angle theta. Angle theta की जगह banking angle theta. Banking angle theta. So we can write the forces: n cos theta is equal to mg, or n cos theta minus mg is equal to 0. Then n sin theta, this is responsible for centripetal acceleration. We can solve 1 and 2. So यहाँ से लिख सकते हैं 1 से n cos theta equals to mg and n sin theta equals to mv square by r. V is the speed जहाँ पे friction use नहीं हो रहा है. If I divide the first equation by second equation, I'll get tan theta equals to v square by r. That is dividing the third equation, fourth equation by third equation. From here we get the speed, that will be equal to root rg tan theta. इस speed पे कोई भी friction required नहीं होगा. At this speed, no friction will be required. Note this down. This is an important concept. सर वो बैंकिंग एंगल होता कहाँ पे, मतलब हाईवे पे? Banking angle, see, horizontal means you will see that road is a bit tilt. Road surface plane नहीं है road. It's a bit tilt. तो अगर रोड का क्रॉस सेक्शन कर दिया, रोड को कट कर दिया, सो हॉरिजॉन्टल से एक एंगल बना सकते हैं रोड का. दैट इज कॉल्ड द बैंकिंग एंगल. सो रोड पहले हॉरिजॉन्टल था, बट जहां पे भी टर्न आया वहां पे रोड का एक साइड ऊंचा कर दिया और एक जो जिस तरफ टर्न है उस तरफ वाला साइड नीचे है, और जिधर टर्न का ऑपोजिट वाला साइड है वो ऊंचा है. सो दिस साइड, ये वाला साइड हायर साइड होगा और इधर वाला साइड लोअर साइड. सर एंड उसका यूज क्या होता है? यूज ये हुआ कि अभी फ्रिक्शन रिक्वायर्ड कम हो गया. अगर फ्रिक्शन रिक्वायर्ड कम हो गया तो टायर्स की लाइफ बढ़ जाएगी. एंड सपोज किसी के टायर्स अगर स्लिपरी हैं, उतने अच्छे नहीं है, someone is not very careful with his car, so his life will be saved. जब वो हाई स्पीड पे टर्न ले रहा हुआ तो कम फ्रिक्शन रिक्वायर्ड. सो मेन टू बेनिफिट्स है कि वेयरिंग ऑफ द टायर अवॉइड कर सकते हैं. एंड सेकंड रीजन इज दैट अगर रेनी डे है और ड्यू टू सम रीजन द कार इज नॉट वेरी गुड, द फ्रिक्शन, द टायर हैज बीन स्मूथ, तो कम फ्रिक्शन रिक्वायर्ड. ऑफ कोर्स इट विल नॉट सेव यू ऑलवेज, but it will reduce the frequency of the accidents. Okay, and it is used wherever there is a turn on the, जहाँ पे भी cars high speed से जा रही है, above 50, above 60 से जा रही है अगर cars, then also this is used. Cars or even for bikes it is used. But see, bike में you must have seen कि जब एक bike racer turn लेता है तो वो खुद ही
tilt कर जाता है. हाँ सर. है ना? So that is one of the reason. हाँ सर, देखा है. Yeah. Sir, when those racers turn to one side, so they try to minimize the friction. No, they try to increase the see. FBD draw करते हैं, clear हो जाएगा. Suppose not the whole thing, but this is how they are. Right. Okay, first try to draw the FBD yourself. ऐसे clear हो जाएगा. Actually, bike racer वाला जो problem है, I will give you in rotational motion because there is a concept of torque involved in it. So अभी उसको include नहीं करेंगे. But see what happens is that mg लगेगा center of mass पे and normal force यहाँ पे लगता है. And friction will be acting over here. So what happens is mg की वजह से एक anti-clockwise torque आता है. It tries to rotate it downward, but friction tries to rotate the bike in the clockwise direction. So जितना mg को बढ़ाते जाएंगे उतना ज़्यादा friction लगा सकते हैं. So this will be studying in rotational mechanics. Okay, ये बात note down कर लिया? हाँ सर. Okay. So direct formula apply करके answer निकाल सकते हैं, but I won't be giving you those easy questions. Suppose along with banking, friction is also there. Along with banking, friction is also there. So now the question is, banking भी है, friction भी है, यहाँ पे mu. So find the maximum value of speed. First part of the question is find maximum speed such that car does not slips. So of course यहाँ पे normal force लगाएंगे, friction भी लगाएंगे, दोनों लगाएंगे यहाँ पे. So try to figure out maximum कितना friction या कितना speed बढ़ा सकते हैं. This time friction is acting. So find maximum speed such that car does not slips. Of course mu rg tan theta से ज़्यादा होना चाहिए speed, क्योंकि अब friction भी लग सकता है. So friction लगेगा surface के along. So you can draw friction along this. This is your friction का direction. So friction का भी एक component होगा जो centripetal force के लिए responsible होगा, centripetal acceleration के लिए responsible होगा. You have to find the maximum speed such that the car does not slips. तो जब ये turn लेने जाएगा, so what will happen? It will try to the car will try to go outwards. And to stop that, there will be a friction acting. Draw the fluid diagram and solve it. And there is one more case. I'll give that one as homework. There is a minimum speed. That you must maintain. Otherwise, n sin theta की वजह से the block will start slipping in the downward direction.
the block will start slipping in the downward direction. So एक minimum speed भी maintain करना होगा. So when that minimum speed occurs, the friction will be acting in the upward direction, up the incline. So in that case, when this car starts skidding downwards, it's called skidding. Find minimum speed such that car does not skids, or you can just call it slip down the incline. Slip down the incline. अगर speed नहीं होगी इसके पास, so it will just skid down, slip down. So first find the first column, and this will be your homework. See, we can write these two relations. Friction ka component along this direction will be F cos theta, and along the vertical direction, friction component will be F sin theta. So F cos theta and F sin theta and F cos theta are responsible for centripetal acceleration. So we can write this first equation, or equation A, and vertical direction में कोई भी acceleration नहीं है. So n cos theta will be equal to mg plus f sin theta. Using these two, we can solve the rest of the equations. So f की जगह mu times n लिख सकते हैं. So this will be mu times n. So from here you'll get normal force will be equal to mg divided by cos theta minus mu sin theta. And we can put the value of this normal force in this equation. So equation A will become n sin theta. n की जगह ये put कर सकते हैं mg sin theta by cos theta minus mu sin theta. अब मैंने assume कर दिया कि maximum friction लग रहा है because I want maximum velocity. So this is n into cos theta multiplied plus f cos theta. Or I think we can simplify the equation first. So this equation को लिख सकते हैं n sin theta. F will be again mu n cos theta, and that is mv square by r. Limiting case ले इसलिए equal ले सकते हैं. And then I'll take it to the next page. So I can take n common. That will be sin theta plus mu cos theta. That equals to mv square by r. From here you can put the value of n in here. That will give you mg by cos theta minus mu sin theta, and numerator में ये आ जाएगा sin theta plus mu cos theta. M and M cancel. So see, mass पे depend नहीं कर रहा. Even if it is a truck or a car or a small car, all will require the same speed. So we will from here will get rg into sin theta plus mu cos theta divided by cos theta minus mu sin theta. So I can divide the whole equation by cos theta. This will be v square. Whole equation by cos theta. So this will become root over rg. That will be tan theta plus mu divided by 1 minus mu tan theta. V will be equal to root rg tan theta plus mu divided by 1 minus mu tan theta. This is the maximum speed that you can give if pura friction applied है तो भी. In that case, we can give this much maximum velocity. This is V max. And from here you will calculate V min. V min का जो formula है वो दिखने में कुछ ऐसा ही होगा.
दिखने में कुछ ऐसा ही होगा बिकॉज फ्रिक्शन का डायरेक्शन चेंज हुआ है जस्ट. So this will be formula for V max. This will be formula for V max. So अभी तक जो केसेस पढ़े ऑल वेयर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में इस वरी कर रहे थे. बट in the following cases, in the next class, we'll be also talking about the tangential acceleration. अभी तक सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में स्पीड कांस्टेंट है तब क्या होता है, that is what we have observed. So your today's homework, you can do it from up to question number 25. Yeah, question number 25 तक complete कर सकते हैं आप. Do try that. Try all the questions to question number 25. So बीच में एक दो questions आएंगे जहाँ पे tangential acceleration भी required होगा. You can try that. जैसे radial acceleration के लिए you need centripetal force. वैसे tangential acceleration के लिए you need a force which is tangent to the circle. So to question number 25 you can try. Okay. And कई सारे students ने upload नहीं किया है previous chapters S.C. वर्मा का photo. So if you have forgotten, then for each chapter you must make a PDF by clicking the photos and upload it on the link. That is ज्ञान ए वाला link है ना, उसमें वहाँ पे homework folder बना हुआ है. सर Yeah. सर कौन से चैप्टर तक अपलोड करना है? Previous chapters तक न्यूटन्स लॉ तक upload करना था अभी तक. ओके सर एक डाउट है. Yeah. एच.सी. वर्मा में फ्रिक्शन वाले चैप्टर में एक ये सॉल्ट एग्जांपल्स में क्वेश्चन 10 Solved example में question question 10. question number 10. अच्छा, question number 10 तो आज ही पढ़ा हमने. Okay, tell me what is your doubt? सर एक्चुअली मैंने 2 दिन पहले ट्राई किया था तो तभी नहीं समझा था. अच्छा, तो अभी तो ये डिस्कस कर लिया हमने. नमन को घुमाया था इसमें. ओके. और कोई क्वेश्चन 9 भी. question 9. तो फ्रीक्वेंसी पूछी गई है इसमें. अच्छा, सो टेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं ना in question number 9. So setup is like this, that दो masses हैं, दोनों को एक rod से बीच में अटैच किया गया है. This is the rod and this is mass m and इसको रोटेट कर रहे हैं about the center. Let us say रोटेट कर रहे हैं ओमेगा से. So it is asked, it is given that कि अगर टेंशन T से ज्यादा हो गया, if T is greater than T naught, then the rod breaks. If T is greater than T naught, rod breaks. So maximum कितनी फ्रीक्वेंसी से घुमा सकते हैं? तो फ्रीक्वेंसी, हाँ सर फ्रिक्शन वाले चैप्टर में. So you're asking about friction chapter. या Specified, I thought it was the circular motion of the chapter. Friction में solved example 10, 9. हाँ. Okay, so the question looks like this. So there is a big block और बड़े ब्लॉक के ऊपर दो छोटे ब्लॉक्स रखे हुए हैं. फर्स्ट ब्लॉक बड़ा ब्लॉक है, छोटे दो ब्लॉक्स दे आर अरेंज्ड लाइक दिस. पुली पे both of them are hanging like this. Both of them have the same mass, small m. This is called block A and block B. And a force C is applied. A force F is applied. And the question is that कि friction कितना, coefficient of friction is given, find it. Okay, mu F कितना apply कर सकते हैं such that the block does not slips. अच्छा, block slip नहीं कर रहा मतलब दोनों blocks
मतलब तीनों ब्लॉक साथ साथ जाएंगे, तीनों ब्लॉक साथ साथ जाएंगे। तो अगर तीनों ब्लॉक साथ साथ जा रहे हैं, दैट मीन्स तीनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। सो व्हाटएवर may be the case, F will be equal to total mass plus acceleration, F plus m plus m, because block does not slip, because all of them have same acceleration. ये part clear है? Yeah. Okay. उसके बाद we'll draw the free body diagram. So let us say कि maximum force calculate करना है. So maximum force जब calculate करेंगे, so either you can do the pseudo force वाला thing, or you can just draw it from the outside. So outside से draw किया, then small m, that is block A पे, tension will be in this direction, normal force mg, and this block is going forward, so you can apply the friction in the backward direction, because here the block इसको आगे ले जाना चाहते हैं. And while if you are drawing the FPD of second block, mg is downward, tension is upwards, और साथ में जा रहे तो कोई relative acceleration नहीं होगा. यहाँ तक clear है? Yeah. Okay. Then we can write. अच्छा, यहाँ पे एक normal force भी लगेगा इसमें. Normal force on B. Normal force on B will be responsible for acceleration of block B. And another thing is that यहाँ पे tension will be responsible for acceleration. T minus F is equal to ma. So यहाँ पे कोई horizontal acceleration नहीं होना चाहिए and vertical acceleration नहीं होना चाहिए. So T is equal to mg, or you can write T minus mg is equal to 0. पर यहाँ पे vertical acceleration नहीं होना चाहिए. So na minus mg should be equal to 0. If I take this as equation 1, this as equation 2, I'll get the value of friction. T की जगह mg put कर सकते हैं. So mg minus f is equal to ma. From here, T minus, or we can just write friction as mu mg, because normal force will be here. यहाँ पे भी surface से friction है ना, यहाँ पे भी surface friction है. अगर ये block T, अगर हम इसको आगे ले जा रहे हैं तो इसमें फ्रिक्शन पीछे लगेगा. मतलब ये ब्लॉक अगर पीछे जाना चाहता है तो इसमें फ्रिक्शन ऊपर लगेगा. लेट मी कॉल दिस फ्रिक्शन एज Fa and this friction as Fp. So Fa will be mu times Na. So I can write this as T minus mu times Na is equal to Ma, and Na की value will be mg. So mu times mg is equal to Ma. But यहाँ पे T minus mg नहीं होगा. Here it will be T plus Fp, because यहाँ पे भी फ्रिक्शन है. दोनों ब्लॉक्स और सरफेस में फ्रिक्शन है, बड़े ब्लॉक में फ्रिक्शन है. So Fb will be mu times Nb. So mu times Nb minus mg. Tension plus mu times Nb will be Ma. Mu times Ma minus mg. यहाँ पे ये होना चाहिए. So I got these two equations for tension. दो इक्वेशन है, दो अननोन्स है. अननोन से यहाँ पे एक्सेलरेशन जो पता है ऑलरेडी, but what we need to find here is find the minimum and maximum force. So acceleration find out कर लिया तो force आ जाएगा. So I will eliminate the acceleration. So eliminate the mass. T by m minus mu g is equal to a आ जाएगा यहाँ से. No, I should have acceleration.
eliminate the tension. So let me subtract equation 1 from equation 2. When I do that, so mu m a plus g और mg इस साइड जाएगा तो m g minus a. mu g minus g. This will be okay. You can solve this to get the acceleration. So this will be mu plus 1 acceleration is equal to g1 minus mu. यहाँ से acceleration आ जाएगा g into 1 minus mu by 1 plus mu. और ये acceleration यहाँ पे put कर सकते हैं and we'll get the value of force. So calculation part, I don't think that's much difficult. So यहाँ पे one thing you have to consider कि जब force maximum लगेगा तो दोनों blocks पीछे जाना चाहिए. दोनों blocks पीछे जाना चाहिए. And thus friction will act in such a way to stop both of them. So दोनों में friction पीछे के direction में लगेगा. And F will be equal to m plus 2m into g 1 minus mu by 1 plus mu. और वही दूसरा वाला केस होगा तो sorry, we have friction in the upward direction. Friction in the upward direction means force is minimum. This is the minimum force. है ना? अगर force कम लगाएंगे तो acceleration कम होगा. Then this will try to go down and this will try to move forward. इसलिए friction पीछे लगेगा. अगर friction ज़्यादा होगा, sorry, अगर force ज़्यादा होगा, so then both of them will try to go backwards. So F max के केस में friction यहाँ पे आगे लगेगा और यहाँ पे friction नीचे के direction में लगेगा. Is it clear? Yeah. Okay. नोट करना है या फिर कर लिया? सर कर लिया. और कोई डाउट है? नो. ओके ठीक है. तो ऐसे वर्मा सॉल्व करना है और जिन्होंने भी चैप्टर एनएलएम तक चैप्टर सबमिट नहीं किया ऐसे वर्मा का सारे क्वेश्चन सॉल्व करके सबमिट करने हैं. एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस कि कैसे सबमिट करना है एंड व्हाट इज द प्रोसीजर, जस्ट पुट अ मैसेज ऑन व्हाट्सएप. आई विल एक्सप्लेन. है ना? ज्ञानी के व्हाट्सएप ग्रुप की समरी में आई put the link for I've already put the link, I think. Okay, do that, then we'll meet in next class and we'll discuss more about the dynamics of circular motion.